Your problem can certainly be cured. आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है. So, what are the webinar contents like? Introduction to Parkinson's disease, understanding Kumbhak therapy, role of Kumbhak therapy in reversing Parkinson's disease, program details. Introduction to Parkinson's disease. What is Parkinson's disease exactly? It's a condition that slowly affects how a person moves. Over time, it can also affect their memory, thinking, and emotions. Anilji, your part. तो पार्किंसन की परिभाषा जान लेते हैं। पार्किंसन रोग एक ऐसी स्थिति है जो धीरे धीरे व्यक्ति की शारीरिक गतियों को प्रभावित करती है, जैसा कि आप में से काफी लोगों ने ऑलरेडी एक्सपीरियंस किया है या आपके फैमिली मेंबर्स ने। समय के साथ यह व्यक्ति की याददाश्त, सोचने की क्षमता और भावनाओं को भी प्रभावित कर सकती है। Parkinson's disease key symptoms. People with Parkinson's may experience shaking of hands or legs, stiffness in the body, slow movements, difficulty maintaining balance. These symptoms usually increase over time if not managed properly. मुख्य लक्षण क्या है पार्किंसन के? पार्किंसन रोग से पीड़ित लोगों में हाथों या पैरों में कंपन, शरीर में जकड़न, गतियों का धीमा होना तथा संतुलन बनाए रखने में कठिनाई देखी जा सकती है। यदि इसका उचित प्रबंधन ना किया जाए तो समय के साथ ये लक्षण धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं। Causes of Parkinson's disease. Parkinson रोग के कारण. Genetic factors. Sometimes Parkinson's can run in the family because of changes in certain genes. However, this type of Parkinson's is not very common. जेनेटिक फैक्टर या आनुवंशिक जो बोलेंगे शुद्ध हिंदी में, कभी कभी पार्किंसन रोग परिवार में भी पाया जा सकता है, जो कुछ विशेष जीन्स में हुए बदलावों के कारण होता है। हालांकि इस प्रकार का पार्किंसन रोग बहुत सामान्य नहीं है, कुछ ही लोगों में होता है। Environmental triggers. Being around harmful chemicals like pesticides or certain metals for a long time can increase the chances of getting Parkinson's, especially in people whose bodies are already more sensitive to such things because of their genes. पार्किंसन के रोग के कारण क्या क्या है? जो एनवायरनमेंट है या पर्यावरण के कारण कुछ है, हानिकारक रसायन केमिकल जो है जैसे कीटनाशक या कुछ विशेष धातु संपर्क में लंबे समय तक रहने से पार्किंसन रोग होने की संभावना बढ़ सकती है। यह जोखिम या ये रिस्क उन लोगों में ज्यादा है जिनका शरीर अनुवंशिक या जेनेटिक कारणों से पहले से ही ऐसे तत्वों के प्रति अधिक संवेदनशील होता है। Aging and cell degeneration. As we grow older, some of the brain cells that help control movement start to wear out and stop working properly. These cells make a chemical called dopamine, and when the body produces less of it, movement becomes slow, shaky, and difficult. और क्या कारण हो सकते हैं? बुढ़ापा और कोशिकाओं का क्षय या डीजनरेशन। जैसे जैसे हम उम्र बढ़ाते हैं, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, मस्तिष्क की वे कुछ कोशिकाएं जो शरीर की गति को नियंत्रित करने में मदद करती हैं, धीरे धीरे कमजोर होने लगती हैं और सही तरीके से काम करना बंद कर देती हैं। ये कोशिकाएं डोपामीन नामक एक रसायन बनाती हैं। जब शरीर में इसका उत्पादन कम हो जाता है तो चलने फिरने में धीमापन आ जाता है, शरीर कांपने लगता है और गतियां करना कठिन हो जाता है, मूवमेंट डिफिकल्ट हो जाता Current treatment limitations. वर्तमान उपचार की सीमाएं. Symptom focus. Current medicines mainly help control the symptoms like shaking, stiffness for some time. They do not fix what is actually causing Parkinson's to worsen inside the body. है। जो अभी इलाज है, जो अभी उपचार के जो तरीके हैं, उनकी कुछ लिमिटेशन होती है। पूरा लंबे समय तक वो काम नहीं कर पाते हैं बीमारी के। तो वो कुछ कारण ये हैं कि जो अभी दवाइयां दी जा रही हैं मुख्य रूप से कुछ समय के लिए कंपकंपी या जकड़न जैसे लक्षणों को नियंत्रित करने में मदद करती हैं, लेकिन ये दवाइयां शरीर के भीतर पार्किंसन रोग के बढ़ने के वास्तविक कारण को ठीक नहीं करती हैं, सिम्टम्स को दबाती हैं। इसका मतलब ये है कि जड़ तक नहीं पहुंच पाती हैं।
Side effects: when you take Parkinson's medicine for many years, they can sometimes start causing unwanted shaking or extra movements. Also, over time, the same medicine may stop working as well as before. और क्या क्या उपचार की सीमाएं हैं या बाउंड्रीज हैं या लिमिटेशंस हैं जो अभी ट्रीटमेंट के तरीके हैं? दुष्प्रभाव जो है, जब आप पार्किंसन की दवाइयां कई वर्षों तक लेते हैं तो कभी कभी वे अनचाही कंपन या अतिरिक्त अनियंत्रित हरकतें पैदा करने लगते हैं, जिसको हम साइड इफेक्ट बोलते हैं। इसके अलावा समय के साथ वही दवाई पहले जितनी प्रभावी नहीं रह जाती। शरीर को दवाइयों की आदत हो जाती है लेकिन कुछ काम नहीं करती हैं खास। Non-motor symptoms: most treatments do not properly help with problems like poor sleep, sadness, stress, or memory issues. So, overall, day to day life still remains difficult to manage. और क्या क्या है, नॉन मोटर सिम्टम्स की बात कर लेते हैं। अधिकांश जो उपचार खराब नींद, उदासी, तनाव या स्मृति से जुड़ी समस्याओं में सही तरीके से सहायता नहीं कर पाते हैं। मेंटल इश्यूज तक पहुंचना बड़ा मुश्किल होता है दवाइयों के लिए। इसलिए रोजमर्रा का जीवन समग्र रूप से संभालना कठिन रहता है। इसके अलावा समय के साथ वही दवाई पहले की तरह प्रभावी रहना भी बंद कर सकती है। Understanding Kumbhak therapy. What is the scientific basis of Kumbhak? कुंभक का वैज्ञानिक आधार क्या है? Oxygen carbon dioxide balance. Holding the breath for a short time helps the body use oxygen better and keep the right balance of gases inside. This balance gives you cells more energy to work and heal properly. चुंबक का वैज्ञानिक आधार, पहला जो पॉइंट है, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन, बैलेंस। कुछ समय के लिए श्वास या सांस को रोक कर रखने से शरीर ऑक्सीजन का बेहतर उपयोग करना सीखता है और शरीर के भीतर गैसों का सही संतुलन बना रहता है। यह संतुलन कोशिकाओं को अधिक ऊर्जा प्रदान करता है जिससे वे सही तरीके से कार्य कर पाती हैं और स्वयं को ठीक करने की क्षमता बढ़ती है। Nervous system regulation. Kumbhak therapy helps your body relax deeply by calming the nerves. When the body is relaxed, it can repair damaged nerves better and support smoother movements. नर्वस सिस्टम का संतुलन या नियमन। कुंभक थेरेपी नसों को शांत करके शरीर को गहरी शांति की अवस्था में ले जाती है और जब शरीर शिथिल और शांत शांत होता है तब वह क्षतिग्रस्त या डैमेज्ड नसों को बेहतर मरम्मत कर पाता है और शरीर की गतिशीलता या मूवमेंट को अधिक सहज रूप से सहारा देता है। Neuroplasty stimulation. Kumbhak therapy helps more blood and oxygen reach the brain. This supports the brain's healing ability and helps damaged nerves work better, again in conditions like Parkinson's. न्यूरोप्लास्टिसिटी की सक्रियता। कुंभक थेरेपी मस्तिष्क तक अधिक रक्त और ऑक्सीजन पहुंचाने में सहायता करती है। इससे मस्तिष्क की स्वाभाविक उपचार क्षमता को समर्थन मिलता है और पार्किंसन जैसी स्थितियों में क्षतिग्रस्त या डैमेज नसों के कार्य में पुनः सुधार आने में मदद मिलती है। What are the benefits of Kumbhak therapy? कुंभक थेरेपी के बेनिफिट्स क्या है? फिजिकल हेल्थ. प्रैक्टिसिंग रेगुलरली हेल्प्स योर हार्ट वर्क बेटर, improves your breathing and makes your body stronger and more active in daily life. कुंभक चिकित्सा के फायदे या उसके लाभ के बारे में बात करते हैं। शारीरिक स्वास्थ्य, इसे नियमित अभ्यास से हृदय की कार्य क्षमता बेहतर होती है, श्वसन प्रणाली मजबूत होती है और शरीर दैनिक जीवन में अधिक सशक्त व सक्रिय बनता है। Mental clarity. Kumbhak helps calm the mind, reduces worry, helps you think more clearly, and can lift your mood. With regular practice, you feel more relaxed, balanced, and positive in daily life. ये बहुत जरूरी है, मानसिक स्पष्टता, क्लैरिटी। कुंभक मन को शांत करने में सहायक होता है, जैसा कि हम पहले बात कर चुके हैं। यह चिंता को कम करता है और सोच को अधिक स्पष्ट बनाता है, क्लैरिटी देता है और मनोदशा को बेहतर रखने में बेहतर करने में मदद करता है। नियमित अभ्यास से आप दैनिक जीवन में अधिक शांति, संतुलन और सकारात्मकता का अनुभव करते हैं।
Neurological support, Kumbhak therapy helps your body move better, reduces shaking, and protects your brain so the disease does not get worse quickly. न्यूरोलॉजिकल सपोर्ट कैसे मिलता है? कुंभक थेरेपी शरीर की गतिशीलता को बेहतर बनाने में मदद करती है, कंपकंपी को कम करती है और मस्तिष्क की सुरक्षा करती है, जिससे बीमारी तेजी से आगे ना बढ़े। Holistic vitality. This therapy helps the mind and body work together smoothly, which brings back your energy, improves how you feel, and makes you healthier overall. समग्र जीवन ऊर्जा, होलिस्टिक थेरेपी मन और शरीर के बीच बेहतर तालमेल स्थापित करती है, जिससे आपकी ऊर्जा पुनः सक्रिय होती है, आप स्वयं को बेहतर महसूस करते हैं और आपका संपूर्ण स्वास्थ्य सुदृढ़ होता है। Role of Kumbhak therapy in reversing Parkinson's disease. Improves motor symptoms, motor लक्षणों में सुधार करता है. Coordination improvement, controlled breath retention, exercises stabilize the nervous system, enhancing motor coordination and precision. समन्वय में सुधार, नियंत्रित श्वास धारण जिसको कुंभक बोलते हैं, अभ्यास तंत्रिका तंत्र को स्थिर करते हैं, जिससे मोटर समन्वय और सटीकता में सुधार होता है। Tremor reduction, regular practice helps regulate brainwave activity, which can reduce severity and frequency of tremors. उत्पन्न में कमी कैसे करता है? नियमित अभ्यास मस्तिष्क तरंगों की गतिविधि को संतुलित करने में मदद करता है, जिससे उत्पन्न की तीव्रता और आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी दोनों में कमी आ सकती है। Postural stability improves motor symptoms, strengthening respiratory and core muscles through breath control, supports better body balance and posture. पोस्चरल स्थिरता यानी कि जो शरीर को एक बैलेंस में रखने की जरूरत होती है, श्वास नियंत्रण कुंभक के माध्यम से श्वसन तथा कोर मांसपेशियों को सशक्त बनाना शरीर के संतुलन और सही मुद्रा को बेहतर बनाने में सहायक होता है। Neuroprotective effects, tantrika sanrakshak prabhav, neural preservation. Kumbhak therapy promotes oxygenation and circulation in the brain, safeguarding neurons from degeneration. तंत्रिका संरक्षण कैसे होता है? कुंभक थेरेपी मस्तिष्क में ऑक्सीजन की आपूर्ति और रक्त संचार को बेहतर बनाता है, जिससे तंत्रिका कोशिकाओं या न्यूरॉन्स को क्षरण या जिसको डिजेनरेशन बोलते हैं, उससे सुरक्षा कर रखने में सहायता मिलती है। Dopamine regulation, deep breathing techniques may boost dopamine synthesis, counteracting its deficiency seen in Parkinson's patients. डोपामीन का नियमन, उसका बैलेंस, जैसे कि ज्यादातर यहाँ पर जो पार्किंसन पेशेंट्स हैं डोपामीन या कुछ इस तरीके की दवाइयां ले रहे होंगे। दुलाल जी प्लीज डोंट स्क्रिबल ऑन द स्क्रीन, आप कृपया अपना स्क्रीन से हाथ दूर रखेंगे तो बेहतर होगा। गहरी Cognitive श्वास, support. This therapy helps activate the parts of your brain that control memory and focus so you can think more clearly and remember things better. संज्ञानात्मक समर्थन या सहायता, यह थेरेपी मस्तिष्क के उन हिस्सों को सक्रिय करने में मदद करती है जो स्मृति और एकाग्रता को नियंत्रित करते हैं, जिससे आप अधिक स्पष्ट रूप से सोच पाते हैं और चीजों को बेहतर ढंग से याद रख सकते हैं। Stress reduction and mental health सबसे important for any patient and especially for Parkinson's. तनाव में कमी और मानसिक स्वास्थ्य. Stress reduction and mental health, anxiety relief, holding the breath for a short time helps the body relax deeply, reduces stress and anxiety, and makes you feel calmer from the inside. चिंता से राहत, कुछ समय के लिए श्वास को रोक कर रखने से शरीर गहराई से शिथिल होता है। ये आप ट्राई भी कर सकते हैं, अभी बैठे बैठे ट्राई भी कर सकते हैं। सांस रोक लीजिए, देखिए कैसे स्थिरता एकदम शिथिल होना शुरू हो जाता है, शांत होना शुरू हो जाता है। यह तनाव और चिंता को कम करता है तथा भीतर से शांति और स्थिरता का अनुभव कराता है। Just a sec.
Let me share, Rachna ji, if you're having any problem. Hey, it's okay. There's some problem. Emotional resilience, calm, guided breathing helps you handle stress better and keeps your mind and emotions more steady and relaxed. भावनात्मक सहनशीलता इससे कैसे बढ़ती है? शांत और मार्गदर्शित श्वसन आपको तनाव को बेहतर तरीके से संभालने में मदद करता है और आपके मन व भावनाओं को अधिक स्थिर, संतुलित और शांत बनाए रखता है। Sleep quality, Kumbhak therapy helps your mind and body relax deeply. When you feel calmer, you are able to sleep better. Good sleep helps improve your mood and overall mental health. यह तो बहुत 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 ही जरूरी है कि नींद ठीक से आप ले पाए। नींद की गुणवत्ता को कैसे बढ़ाता है? कुंभक थेरेपी आपके मन और शरीर को गहराई से शांत और शिथिल करने में सहायता करती है, क्योंकि जब तक शांत नहीं होंगे शरीर सोने की तरफ नहीं जा सकता। जब मन शांत होता है तो नींद की गुणवत्ता बेहतर होती है और अधिक और अच्छी नींद आपके मूड तथा संपूर्ण मानसिक स्वास्थ्य को सकारात्मक रूप से सुधारने में मदद करती है। Now I'd like to introduce you all to Swami Sri Rajuji, a rare Kumbhak yogi. Swamiji has been transforming lives of thousands of people who have not found any relief even after years of using allopathic medicine. Let's hear from Swami Sri Rajuji. Please pay attention to what he has to say about the human body and the diseases, because you will not find this information anywhere else. Through his knowledge, thousands of people suffering from chronic ailments have transformed their lives completely. It can change yours also. Thank you so much for listening to me patiently. Now, I would like to let you know how we are going to proceed in the webinar. After this, you're going to listen to the recorded video of Swamiji. उसके बाद हम लोग ऑनलाइन प्रोग्राम डिटेल शेयर करेंगे एंड वी विल either share a video or we will have somebody live who's been a part of the Parkinson reversal program. Last but not the least, we will be taking up your questions regarding your disease. So everybody take your virtual seats there. Let there be no disturbance. You are going to hear about something unique, a different aspect of dealing with your Parkinson's disease. So over to Anilji to share the screen. तो आज हम पार्किंसन और पार्किंसन से कैसे निकल सकते हैं इसके बारे में हम बात करें। लेकिन सबसे पहली चीज जो आप देखते हैं पार्किंसन में, वो क्या प्रॉब्लम है? कोई भी चीज हिल रही है, मतलब कंट्रोल में नहीं है ना? कंट्रोल में नहीं है। तो कुछ एक्सपेरिमेंट भी करेंगे जिससे कि आपको डायरेक्टली समझ में आए कि इसको कैसे संभाला जा सकता है। तो एक एक्सपेरिमेंट हम सभी साथ में करें। सभी साथ में करते हैं एक एक्सपेरिमेंट। तो एक हाथ को हिलाइए, दूसरे हाथ से इसको कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए। कैसे करेंगे? या ऐसे ऐसे हिलाइए, या अच्छा रहेगा कि कोई दूसरा हिलाए और आप उसके हाथ को कंट्रोल करने की कोशिश करें। तो कैसे कैसे करेंगे कंट्रोल? आप देखेंगे कि आप उसे पकड़ के सांस रोक लेंगे। उसको रोकने के लिए, उस शिवरिंग को रोकने के लिए आप सांस रोक लेते हैं। या बॉडी में भी कहीं शिवरिंग होती है तो पीछे आप देखेंगे सांस रुकता है। यानी सबसे पहली चीज, अगर कंट्रोल नहीं हो रहा तो क्या चीज वीक है आपके शरीर के अंदर? ओके, सो I'll speak in both English and Hindi. The first thing that anybody who has Parkinson, the person faces is shivering, uncontrolled movement. Now, to control the movement, you can do this experiment. Tell somebody to actually shake his hand or her hand, and you try to control that. How do you do that? You hold your breath and try to control it. By holding your breath, you also try to control any movement in your body. आपके शरीर में भी किसी भी मूवमेंट के लिए को कंट्रोल करने के लिए आप सांस रोक लें। सो द फर्स्ट थिंग इज, पहली चीज जो आपको करनी है, you increase the breath hold capacity. The first thing that you need to do to actually come out of Parkinson or to handle Parkinson
is increase the breath hold capacity. Breath hold capacity आप बढ़ाइए. बिना इसको बढ़ाए पार्किंसन कंट्रोल में नहीं आ. Without enhancing your breath hold capacity, you can't just control Parkinson. There is no treatment to Parkinson. So this is the first thing that everybody has to understand. So what is breath hold known as? Breath hold को क्या बोलते हैं? Breath hold is known as Kumbhak. And we are introducing Parkinson course to come out of Parkinson Kumbhak course. Kumbhak to come out of Parkinson, that module. We are calling it Shanta Vritti. Now, Visham Vritti is Parkinson and Shanta Vritti is the treatment for Parkinson. So this course is called as Shanta Vritti or the Parkinson Kumbhak course. Now, first of all, when was it recognized that there is something called Parkinson? It was 120 years ago. 120 साल पहले ये पता लगा किसी इजरायली व्यक्ति ने ये पता लगा, some Israeli person. But in 120 years we still don't know why Parkinson happens. 120 साल के बाद भी हमें नहीं मालूम कि पार्किंसन क्यों होता है. And the treatment of levodopa today, dopamine or levodopa अगर आप देखें, is not an effective treatment. इससे कोई treatment तो होता नहीं. Is not an effective treatment. So we will look at Parkinson from a different perspective. हम Parkinson को एक बिल्कुल ही अलग आयाम से देखेंगे. And people who have done our course, they say they have seen changes, positive changes, and they have got lot of help. In fact, their life has changed. So how do we look at Parkinson? Parkinson को कैसे देखें? एक मैंने बताया विषम वृत्ति और शांत वृत्ति के तरीके से देख सकते हैं. उससे पहले मैंने जो एक्सपेरिमेंट करवाया, the experiment that we did, it was all about lack of breath hold capacity. So if you improve your breath hold capacity, the control will improve, and that's how you will get help in Parkinson. Now, when we say Visham Vritti and Shanta Vritti, yeah, our body actually does everything in a cyclical manner. Like for example, the movement of anything inside the body is cyclical. Well, blood flow is cyclical. Even the neuron message flow is cyclical. The food flow is cyclical. If we also take into consideration the nature, प्रकृति को भी साथ में ले तो सब cyclical ही होगा. तो पहली बात, what is the weakness in a Parkinson person? It is called as apana dosha. अपान दोष का वीकनेस है. इसका मतलब क्या हुआ? Anything in your body, if it moves down in a force system called apana. अगर कोई चीज ऊपर से नीचे जा रही है तो एक शक्ति है जिसे हम अपान कहते हैं, वो अगर बहुत अच्छी है तो ही वो ठीक से नीचे जा पाएगी. So the first observation and the problem with a Parkinson person is constipation. Constipation Parkinson के पेशेंट में बहुत ज्यादा होता है. Constipation means what? Constipation का मतलब क्या होता है? I'll talk about two things. यहाँ पे दो चीजों के बारे में बात करूंगा. When you eat something, तब आप जब भोजन करते हैं, it has to go down in a particular order. एक तरीके से उसको नीचे जाना चाहिए. So Parkinson patient have this weakness. ये नीचे ठीक से नहीं जाएगा तो आपको bowel movement ठीक से नहीं होगा. The bowel movement will not happen properly if it doesn't go down properly. The force through which it goes down is called as apana bala or apana shakti, apana vayu.
So this apana dosha in a long term results into Parkinson. What happens if there is an apana dosh? If something is not able to go down properly, what will happen? The flow will try to reverse. पानी एक जगह अगर नहीं जा पाए तो वो पीछे आने की कोशिश करता है. कोई चीज नीचे नहीं जा पाए तो ऊपर आने की कोशिश करता है. Something which cannot go down properly will try to go up. This is called as urdhgat vayu, reversed vayu, reverse force. If it is for many years, काफी सालों तक ये रिवर्स फोर्स रहेगा, बॉडी के अंदर रिवर्स फोर्स रहेगा, तो इट विल इंपैक्ट द ब्रेन. ये आपके ब्रेन को इंपैक्ट करेगा. ब्रेन इज अ क्लस्टर ऑफ नर्व्स. ब्रेन क्या है? तंतु का एक इकट्ठापना है. ठीक है ना? तो तंतु के ऊपर अगर इंपैक्ट करेगा, इफ इट इंपैक्ट्स द ब्रेन, इट विल इंपैक्ट हॉर्मोन्स विच फ्लो इन द ब्रेन. ब्रेन में जो हॉर्मोन्स फ्लो होते हैं उसको इंपैक्ट करेगा. सो द होल नर्वस सिस्टम विल गेट डिसइंटीग्रेटेड. वो ठीक से फंक्शन नहीं कर पाएगी. आपका नर्वस सिस्टम ठीक से फंक्शन नहीं कर पाएगा. नाउ यू विल हैव टू इंटीग्रेट इट बैक. बट वॉट वी आर सीइंग, हम क्या सोच रहे हैं, बिकॉज देर इज स्केर्सिटी ऑफ डोपामिन. डोपामिन की कमी हमको दिखेगी ब्लड में, तो हम क्या कर रहे हैं? डोपामिन डाल रहे हैं. बट वाई देर इज अ स्केर्सिटी ऑफ डोपामिन? डोपामिन की कमी क्यों है? वी डोंट नो. सो आई एम टेलिंग यू, मैं आपको बता रहा हूं क्यों कमी है. बिकॉज दिस ऊर्ध्वगत वायु इज इंपैक्टिंग द ब्रेन. ब्रेन को हमेशा डिस्टर्ब कर रहा है, हिला रहा है वो. और वहां पे जो हार्मोनल फ्लो है, इट इज नॉट हैपनिंग प्रॉपरली. नाउ इफ यू सी द सिम्टम ऑफ अ पार्किंसन पेशेंट, तो आपको पता चलेगा कि सी देर इज अ पिट्यूटरी ग्लैंड विच इज लोकेटेड इन द ब्रेन, द मास्टर ग्लैंड. वही आपके सारे हॉर्मोन्स को कंट्रोल करता है. अगर ब्रेन पे इंपैक्ट है तो आपके सारे हॉर्मोन्स पे इंपैक्ट आएगा. सो आप क्या देखेंगे? व्हाट ऑल यू विल बी एबल टू सी? इनबैलेंस इश्यू. बैलेंस कहां से आता है? कॉक्लिया है ना. कान के अंदर एक नर्व का बंडल है. जैसे नर्व बंडल का कॉक्लिया, फ्लूइड फिल्ड नर्व बंडल. द प्रेशर इज नॉट प्रॉपर, एंड इफ द प्रेशर इज नॉट प्रॉपर देयर, the balancing will not happen properly. Balancing problem आएगा ही आएगा. light-headedness आएगा upon standing. If खड़े होंगे तो चक्कर आ जाएगा. blackout, sometimes blackout will happen. तो क्या है? It is impacting the brain, it is impacting the pituitary gland and the hormones which are released across the body in the brain also. So if you do not integrate the whole brain back, if you don't integrate the things back, तो वो इंटीग्रेशन के बगैर ये चीज ठीक हो ही नहीं सकते. There cannot be a medicine for it. मैं आपको साफ बता देता हूं, there cannot be a medicine for Parkinson. So that is why we make people do tantu bandh kumbhak. To integrate the whole nervous system, we make them do tantu bandha kumbhak. आप इंटीग्रेट कैसे करते हैं? कैन वी डू सम एक्सपेरिमेंट? कैन वी डू सम एक्सपेरिमेंट? हाँ, अगर कोई आपको दोनों हाथों से खींचने की कोशिश करे, somebody is trying to pull you from both the sides and you are trying to pull them both towards yourself, you are integrating yourself. How do you do it? कोई बहुत जोर से खींचिए अपनी तरफ में. हाउ डू यू डू? करके देखो, ट्राई इट आउट, है ना. अपने हाथों को ऐसे रखिए और ऐसे जस्ट इमेजिन टू पीपल आर पुलिंग दीज हैंड्स ऑन देयर साइड टुवर्ड्स ऑपोजिट साइड एंड यू आर ट्राइंग टू पुल इट बैक. हाउ डू यू डू? बहुत टाइट से करके देखो. यू होल्ड योर ब्रेथ. वो व्हाट इज द इंटीग्रेटिंग फैक्टर इन योर बॉडी? आपके शरीर में वो कौन सी चीज है जिससे आप वापस इंटीग्रेट करते, इकट्ठा करते हो? इट इज ब्रेथ होल्ड.
बिना सांस रोके आप इकट्ठा नहीं, इंटीग्रेट नहीं कर सकते अपने आप। सो द मोर यू प्रैक्टिस दिस कुंभक, तंतुबंध कुंभक, the more your body will get integrated, your brain will also get integrated. To integrate the and to normalize the flow in the brain, we give you a specific mantra. आपको हम एक मंत्र देते हैं, and the mantra is breath mantra. हाँ, शांत वृत्ति means cycle, शांत means easy. Haphazard cycle is a different. Visham vritti cycle. Visham vritti is not in proper flow. Shanta vritti means in proper flow. We give you a mantra, a breath mantra. You do it with your breath to make your cycle easy. Acha. So that is why what we are saying is, without Kumbhak, Parkinson cannot be treated. You can't treat Parkinson without Kumbhak. Kumbhak के बगैर Parkinson को ठीक किया ही नहीं जा सकता. Whatever the situation, कितना भी खराब situation हो, if you want your life to be empowered, to be good, better, you'll have to practice Kumbhak. Now in this we also use a practice in Apana Sthapana practice with some weight. Weight के साथ भी हम थोड़ा सा weight धीरे धीरे start करके उसके साथ में हम practice शुरू करते हैं. And as you go ahead, you'll see you will have more strength in your body. That means जो आपका मसल का इशू आता है, मसल के इश्यूज, मसल स्टिफनेस जो आपकी आती है, मॉर्निंग मसल स्टिफनेस, वो भी आपकी निकल जाएगी. बॉडी में स्ट्रेंथ आएगा, यू विल हैव मोर कंट्रोल ओवर योर बॉडी. The balancing problem with Kumbhak, because Kumbhak is also the correcting the pressure ecosystem of your body. आयुर्वेद में इसको हम वात बोलते हैं. So how can you correct the vata or the pressure ecosystem? The only way to correct vata through yourself, by yourself, through your body is breath hold और कुंभक. तो वात को कंट्रोल करने का सबसे पावरफुल तरीका क्या है? कुंभक. There can be medicine which also helps in controlling vata, and you can also take support of that, but then it will not increase your body's capacity. कोई भी दवाई आपके शरीर की कैपेसिटी, स्ट्रेंथ नहीं बढ़ाती. ये बात समझिए. किसी भी दवाई से आप कोई भी क्रॉनिक डिजीज ठीक नहीं कर सकते. There is no evidence in the last 100 years that any chronic disease has become fine by taking chemical or non-chemical medication. एक भी डायबिटीज ठीक नहीं हुआ 100 साल में. ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज ठीक नहीं हुआ. इट हैज बिकम नंबर 1 कॉज ऑफ डेथ. थायराइड इज इंक्रीजिंग. 30 years back there was no thyroid. And neuromusculoskeletal problem, है ना, arthritis, rheumatoid, autoimmune disorder, cancer is increasing at an epidemic rate, and it will become an epidemic in 15 to 20 years. 15-20 साल में कैंसर जो है एपिडेमिक ही बन जाएगा. तो no medicine has been able to cure Parkinson also and related problem. उससे related problem भी कोई मेडिसिन ठीक नहीं कर पाया. Now Vata is pressure, Pitta is temperature, and Kapha is material management. Kumbhak is the most powerful method to control Vata. And if you use some external medicine, natural medicine, it will be like सोने पे सुहागा कहते हैं ना, it will become like more effective. Now, because the movement is not proper, so ड्रूलिंग और डिफिकल्टी इन swallowing, खाने में डिफिकल्टी, क्योंकि वायु जो है वो एक तरीके से मूवमेंट जो है प्रॉपर नहीं. सो वी ऑल्सो गिव यू कस्टमाइज प्रैक्टिस. सपोज देयर इज अ प्रॉब्लम विथ वन पर्सन इन मोर इन swallowing, सो द पर्सन ऑल्सो हैज नाग दोष, फिर हम उसको नाग कुंभक भी अलग से देते हैं. सो वी कस्टमाइज योर मॉड्यूल ऑल्सो. अच्छा, इसके अलावा
वीकनेस, फटीग, डिप्रेशन एंड एंजाइटी। तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। नाउ इफ यू हैव एनर्जी इन द बॉडी, आपके शरीर में अगर एनर्जी है ज्यादा, तो द बॉडी विल रिकवर ऑल्सो थ्रू दैट एनर्जी। अपने इसको बॉडी रिकवर करेगा। सो वन थिंग दैट आई वॉन्ट टू से टू एवरीबडी, दैट इट इज ओनली योर बॉडी विच रिकवर्स इटसेल्फ। केवल आपका शरीर ही आपको रिकवर कर सकता है। इवन इफ ईश्वर कम, भगवान आ जाए ना, तो भी आपको ठीक नहीं करता। तो इंक्रीजिंग द एनर्जी इन द बॉडी is a must. So we have done the world's first scientific experiment correlating Kumbhak with mitochondria health. Mitochondria क्या है? आपके कोशिकाओं में एक एनर्जी पावर हाउस है। इट्स अ पावर हाउस ऑफ योर सेल। तो in 4 weeks of Kumbhak, the scientific experiment says the mitochondria health improves drastically. 4 हफ्ते कुंभक करने से ही माइटोकॉन्ड्रिया की हेल्थ बहुत बढ़ जाती है, यानी एनर्जी बहुत बढ़ जाती है। इसका मतलब इफ यू वांट टू कम आउट ऑफ फटीग, अगर फटीग से निकलना चाहते हैं, कुंभक इज अ मस्ट। और दूसरा एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। तो इफ यू हैव लॉट ऑफ एनर्जी, यू विल बी एबल टू पुश समथिंग बेटर। आपके अंदर एनर्जी बहुत अच्छी है, तो आप पुश कर पाएंगे किसी चीज को अच्छे से। तो पुश करके देखते हैं। ठीक है ना, पुश पुश करके देखते हैं। लेट्स पुश। एक हाथ ऐसे रखिए, सभी करेंगे, सभी करेंगे। लेट्स पुश, पुश हार्ड। तो ये पुश करने की एनर्जी आप कैसे प्रोड्यूस करते हैं बॉडी के अंदर? हाउ डू यू प्रोड्यूस दिस एनर्जी फॉर पुशिंग फ्रॉम द बॉडी? व्हाट इज द ट्रिगर? ट्रिगर क्या है? पीछे देखेंगे, सांस रोक के। सो एनर्जी प्रोड्यूसिंग ट्रिगर इज योर ब्रेथ होल्ड और कुंभक। कुंभक आपके बॉडी का एनर्जी प्रोड्यूसिंग ट्रिगर है। एंजाइटी ओनली हैपन्स इफ यू हैव लैक ऑफ एनर्जी। आपके अंदर स्ट्रेंथ की कमी है, तभी एंजाइटी और डिप्रेशन होगा। डिप्रेशन मीन्स यू आर इन अ स्टेट वेयर देयर इज नो एनर्जी इन योर बॉडी। आपके शरीर में एनर्जी फील ही नहीं होगा। सो अ साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट विच सेज कुंभक इंक्रीजेस माइटोकॉन्ड्रिया हेल्थ एंड इंप्रूव्स एनर्जी, ओवरऑल एनर्जी इन द बॉडी। तो ये चीजें, फटीग, डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सब खत्म हो जाएगा। लो वॉल्यूम होता है, हाइपोफोनिया, लो वॉल्यूम जाएगा क्योंकि एनर्जी ज्यादा होगी। कॉग्निटिव चेंजेस ऑल्सो हैपन्स बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एनर्जी एंड द डिसइंटीग्रेटेड नर्वस सिस्टम, है ना। कॉग्निशन, मेमोरी भी अगर देखा जाए इसके साथ में आएगा। सोचने में स्लोनेस, स्लो थिंकिंग। So these two things together, energy and integration of the nervous system, will improve memory. Memory, हमारे पास में बहुत एग्जाम्पल है ऐसे। There are a lot of people, they had memory loss and after doing Kumbhak, their memory came back. I'm myself is an example. मैं खुद एक एग्जाम्पल हूं उसमें। Urinary problem, because the flow is not proper, the pressure is not proper. आपके बॉडी का प्रेशर इकोसिस्टम ठीक नहीं है। कुंभक करने से प्रेशर इकोसिस्टम ठीक होगा। योर बॉडी इज नॉट एबल टू डाइजेस्ट थिंग्स प्रॉपरली। रीजेनरेटिव लॉस है या रीजेनरेटिव वीकनेस है आपके बॉडी में, न्यूरो रीजेनरेशन नहीं हो रहा। तो योर मेटाबॉलिज्म विल इंप्रूव, इट विल इंप्रूव द व्हाट यू कॉल एज जठराग्नि। कुंभक से ही पित्त निर्माण होता है। बिकॉज ऑफ प्रेशर, द थर्मल, द टेम्परेचर ऑल्सो increases, so your digestive strength will improve, regenerative strength will also improve. It will also improve your what you call as immune factor, है ना, उसको भी ये improve करता है। एंड पंचतत्व दोष निवारण जो है, ये आप देखेंगे द पंच भूत और पंचतत्व दोष निवारण, द one of the पंचभूत is आकाश, वायु, सेकेंड अग्नि, जल and prithvi. So because of the pressure ecosystem which is आकाश, pressure ecosystem and वायु, या आकाश वायु मिलेगा तो pressure ecosystem बनेगा।
कुंभक correct the pressure ecosystem thereby correcting everything else below. है ना? तो सुनने में किसी को दिक्कत है, इट इज आकाश दोष, है ना? आकाश दोष, आकाश और वायु दोष दोनों मिलके ये प्रॉब्लम करते हैं. इफ देयर इज अ हियरिंग प्रॉब्लम एंड अदर प्रॉब्लम लाइक टेस्ट प्रॉब्लम, है ना, डाइजेशन प्रॉब्लम, देन द होल what do you call as the water balance of your body and the strength factor of your body, ये सारा कुंभक से ठीक होता है. Now, I've taken all the problems, sleep problem, insomnia, restless legs, है ना? तो insomnia, if you see why insomnia is happening, I'll take an example of a balanced moving vehicle. एक बैलेंस में गाड़ी चल रही है, आप खड़े हैं, you don't have to hold anything. आप किसी चीज को पकड़ेंगे नहीं, you will be in balance. But if the road is not good, what will happen? You will catch hold of something. So because of the flow, the cyclical flow in the body is not proper, body is trying to hold on to it. अंदर आपका शांत नहीं होंगे, शांत नहीं होंगे तो नींद नहीं आएगी. टेंशन में नींद नहीं आती, अशांति में नींद नहीं आती, शांत वृत्ति. दैट इज व्हाई द प्रोसेस which are given in this program will create a shanta vritti and then you will be able to sleep. उसके बाद फिर आप सो पाएंगे. अपार्ट फ्रॉम दैट, इसके अलावा हम क्या क्या और करवाते हैं, व्हाट ऑल वी मेक यू, देयर लॉट ऑफ थिंग्स विच वी गिव इन दिस प्रोग्राम. अभ्यंगा, specific oil combination, how to massage on your body, which side and how to massage, ये बताते हैं. What are natural support you can take to come out of constipation and all these issues, वो हमको कर्णपूरण, गंडूश, ये सारी चीजें भी इसके अंदर हम बताते हैं. We tell you about कर्णपूरण, गंडूश, अभ्यंगा. Then apart from that, what all we teach in this program, हम और क्या सिखाएंगे आपको? We'll teach you Anganyasa, the Vata Anganyasa. We'll teach you a part of Vata controlling process, है ना? Marma Vinyasa, Vata Marma Vinyasa will teach you. So वात वाला पार्ट, कुछ वात कुंभक, प्रकृति शूल कुंभक वात के लिए आता है, वो हम सिखाएंगे इसके अंदर. वात वाला पार्ट कुछ और भी, अपार्ट फ्रॉम अपान स्थापना, है तंतुबंध कुंभक, मंत्र, मंत्र दीक्षा, and vayu, anything and everything related to vayu. We'll also give you a vaidya support, है ना? आयुर्वेदिक वैद्य सपोर्ट भी हम आपको देंगे इसके साथ साथ. सो यू मस्ट अंडरस्टैंड, आपको ये बात समझनी पड़ेगी दैट without empowering your body, you can't come out of Parkinson just by taking external support or medicine. बाहरी दवाइयों से, किसी भी तरीके की दवाई में और एक्सटर्नल सपोर्ट से आप इससे नहीं निकल सकते. Kumbhak is a methodology to empower your body, to empower your system, to empower your mind. And by doing Kumbhak, thousands and thousands of people have been able to reverse their problem, or at least become independent and come out of most of the symptoms. तो ये बहुत ज़रूरी है हर एक की लाइफ में. इनफैक्ट पूरी दुनिया में, पूरे संसार में, अगर हमें शरीर को सुदृढ़ और एम्पावर करना है, इफ यू वांट टू एम्पावर द ह्यूमन बॉडी विच इज गोइंग टुवर्ड्स डिसएम्पावरमेंट एंड वीकनेस, कुंभक has to happen in everybody's life. थैंक यू. अब आगे आपको थोड़ा प्रोग्राम के बारे में और बता देते हैं. Thank you so much for listening to Swamiji patiently. Now I would like to request, just a sec. I would like to request
Muralidharji to please share his journey of Parkinson's. Muralidharji. Good evening, madam. Yeah. Good evening, Hello. sir. Thank you so much for joining us today. Thank you. In fact, I am a retired banker. I'm running 73 Okay. now. And I had a lot of Okay. problems. In fact, what are the Swamiji told, no? Depression, tremor, balancing, and constipation, whatever you call it, all these problems. So from day one, it started to coming to me for the past 6 years. But after joining this program, definitely I had a lot of changes in my movements. I'm able to talk freely now. The disturbance is not there. Even balancing, in fact, it is well improved. I'm able to walk alone now in the streets. I travel around 1 to 2 kilometers now. And apart, I am able to sign it properly. The signature I had is a problem while signing it. So such things really improvement is there. I can call it is more than 40 to 50% improvement is I'm able to observe it. And I'm daily following it up. This all these exercises, what are the Kumbhak exercises, I'm doing it. Really, it is very good. And he suggested that morning that turmeric, black turmeric with the ghee, everything. That also I'm doing it. So definitely it is a improving factor, and I continue to do it also. It gives me a lot of, in fact, confidence. I'm getting self confidence. Self confidence, I'm getting it, which was lacking before joining this program. I got really appreciate it. Thank you for this course. Thank you so much, sir. Now I would like to invite Dr. Sabera Sultana to please share her journey of Parkinson's. Dr. Sabera, Yes, good can you evening, please madam. switch on your camera? Yes, I can see myself in the camera, that's all. Yeah, that's good. That's great. Just a sec. Yeah, you are able to. We are able to see. We are able to see. Thank you so much, ma'am. Yes, we can see you now. Good evening, everybody. Good evening. Madam, I am Dr. Sabira from Hyderabad. So I have found myself with better handwriting, better hold of the bladder, and what more? Stability little. I'm practicing myself. Daily routine I'm following my clinic. I'm seeing the patients. So it is very helpful for me. All these exercises I'm doing regularly. And I found quite, this unintentional tremors जो रहते, that is also a bit less after joining this program. Thank you so much, ma'am. I think you would like to say something more. I'm so sorry to interrupt. No, one of our past participant, when at the beginning when we saw him, he was having lots of voluntary movements in his body also, coarse voluntary movements. Now recently, when we have seen in the video, he has improved a lot. Almost 30 to 40% of improvement is there in his body. One of our colleague of this batch. That's I don't want to great. take that. I don't want to take that. And moreover, I've reduced my medicine also. I used to take 6 tablet of Sindopap plus. Then 2 3 days I forgot about to take properly. But with 3 and 2 also I was managing properly. Then I reduced to 3. Now I'm continuing with the 3 tablets and finding quite comfortable with that. So my medicine is reduced, my daily activities are increased with more intensity, and I'm finding quite difference in my life also, day-to-day life. I myself feeling that I'm also a productive person now instead of becoming vegetable of Parkinson's.
I Thank you hope so I'm much, clear. Dr. Sabera. Yes, ma'am. Thank you so much for all your insights. So now over to Anilji to share the program details with our participants. Thank you, Rachna ji. Just give me a second and I'll Sure. also share my screen. Okay, so let us get to know the online Kumbhak therapy details now. काफी लोग इंतजार कर रहे होंगे प्रोग्राम डिटेल्स के लिए. The name of the program is शांत वृत्ति, as Swami ji has told in the video also. इस प्रोग्राम का नाम शांत वृत्ति है और ये ऑनलाइन प्रोग्राम है, जैसा कि आपको अभी तक पता चल चुका होगा. इट्स अ गाइडेड प्रोग्राम कंडक्टेड ऑनलाइन बाय ट्रेन्ड कुंभक मेंटर्स. स्वामी जी द्वारा ट्रेन्ड कुंभक मेंटर्स होते हैं जो आपकी क्लासेस कंडक्ट करेंगे. ये तो हुई पहली बात. दिस इज द फर्स्ट थिंग. नाउ द ड्यूरेशन ऑफ द प्रोग्राम इज 10 वीक्स. 10 हफ्ते की अवधि है इस प्रोग्राम की. एंड देयर विल बी 2 लाइव क्लासेस कंडक्टेड पर वीक फॉर 10 वीक्स. 10 हफ्ते के लिए हर हफ्ते 2 क्लास होंगी, यानी कि टोटल 20 क्लासेस होंगी. टोटल ऑफ 20 क्लासेस ओवर अ पीरियड ऑफ 10 वीक्स. Class recordings will be available for 12 months so that you can watch again and understand each and everything clearly. तो क्लास की रिकॉर्डिंग रहेंगी, पूरा 1 साल तक आपके पास रहेंगे ताकि आप एक एक चीज अच्छे तरीके से समझ सकें. Apart from that, you'll have written instructions also in English and Hindi, which can be downloaded and printed also. ये जो लिखित निर्देश होंगे वो आप डाउनलोड करके प्रिंट भी ले सकते हैं. And these will come very handy when you're traveling or when the internet is low or when there's no internet at all, because that time your videos may not play properly. And if you have the written instructions with you, you'll be able to do your daily practices without any problem. ये लिखित निर्देश आपके तब बहुत काम आएंगे जब या तो आप ट्रैवल कर रहे हैं या फिर इंटरनेट स्पीड कम है या इंटरनेट है ही नहीं, क्योंकि उस समय फिर आपके वीडियोस तो प्ले होंगे नहीं. तो लिखित निर्देश आपके साथ रहेंगे तो आप डेली प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि जैसे मैंने बताया हफ्ते में 2 दिन क्लास होंगी, बाकी दिन खुद प्रैक्टिस करनी होगी. देन दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सपोर्ट सिस्टम दैट विल बी अवेलेबल टू यू. ये हमारे सपोर्ट सिस्टम को सबसे अहम हिस्सा है, क्लास व्हाट्सएप ग्रुप. As soon as you enroll, you will be added to this private class WhatsApp group for daily support. Like I said, there'll be 2 live classes per week. The remaining days when you're practicing on your own, if you have any doubt, any question, so this is the place that you'll be posting your questions and doubts in. Your mentors will be there in these groups also. So they'll be answering each and every question. They'll clarify all your doubts and they'll keep on guiding you in a step by step manner. जैसा मैंने बताया 2 क्लास रहेंगी हर हफ्ते, बाकी दिन खुद प्रैक्टिस करेंगे आप. जब खुद प्रैक्टिस कर रहे होंगे उस समय मान लीजिए आपके मन में कुछ सवाल आता है, कुछ डाउट आता है, तो इस क्लास व्हाट्सएप ग्रुप में आपने पूछना है. जो आपके लाइव क्लास में मेंटर्स होंगे वो इस ग्रुप में भी ऐड होते हैं. वो आपके हर एक सवाल का जवाब देंगे, एक एक डाउट क्लियर करेंगे और स्टेप बाय स्टेप तरीके से आपको डेली बताते रहेंगे. नाउ दिस इज द मैजिक ऑफ दिस थेरेपी. ये इस थेरेपी का जादू है, प्राण शक्ति डायग्नोसिस. थ्रू दिस डायग्नोसिस स्वामी जी इज एबल टू डिटरमिन द weak functional strength in your body due to which you have landed in your Parkinson's or related problems. इस डायग्नोसिस से स्वामी जी बीमारी की जड़ तक जा पाते हैं और पार्किंसन किस वजह से हुआ या पार्किंसन जैसी और जो प्रॉब्लम है आपके शरीर में किस वजह से हुई, ये स्वामी जी जान पाते हैं कि आपके शरीर में वो कौन सी शक्तियां कमजोर हो गई हैं जिसकी वजह से आप दिक्कत में आ गए. दिस इज अ यूनिक डायग्नोसिस एंड वन ऑफ इट्स काइंड ऑफ द होल प्लैनेट. पूरी दुनिया में ऐसा कोई डायग्नोसिस नहीं है, क्योंकि ये नॉन मेडिकल डायग्नोसिस है. नॉन मेडिकल डायग्नोसिस एंड सेकेंडली इट्स एन ऑनलाइन डायग्नोसिस ओनली. दूसरी बात ये है कि ऑनलाइन में ही होता है ये. लेट मी एक्सप्लेन हाउ दिस इज डन. आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे पॉसिबल है, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ. You'll get a link to a form and you'll be asked to do some experiments on your breath and emotions and note the observations in this form. आपको एक फॉर्म का लिंक मिलेगा और आपको कुछ एक्सपेरिमेंट करने के लिए कहा जाएगा अपनी सांसों के ऊपर और अपने इमोशंस के ऊपर, और ये नोट करना होगा इस फॉर्म में. सेकंड, you will be writing about all your health issues in detail and in the order that they occurred in. You'll write like this problem came first, then this, and like this. दूसरा जो काम करेंगे इस फॉर्म में, अपनी जितनी भी दिक्कतें हैं स्वास्थ्य संबंधी, आपकी जितनी भी दिक्कतें हैं
और इस क्रम में लिखेंगे कि पहले ये दिक्कत आई, फिर ये, इस तरीके से ये सारी दिक्कतों के बारे में आप डिटेल में लिखेंगे इस फॉर्म में. एंड थर्ड, यू विल बी आस्क्ड टू अपलोड अ सेल्फी फोटोग्राफ, shoulder and above, in which the face should show very clearly, but there have to be no specs on the eyes, and in case of ladies, no makeup also. तीसरी जो चीज इसमें करनी होगी आपको, एक सेल्फी फोटो अपलोड करनी होगी जिसमें चेहरा क्लियर दिखता हो लेकिन आंखों पर चश्मा ना हो, और लेडीज के केस में कोई मेकअप भी ना हो. जब ये तीन चीजें स्वामी जी के पास पहुंचती हैं तो ये पता कर पाते हैं स्वामी जी की कौन सी शक्तियां कमजोर हो गई हैं. स्वामी जी के अगर आप कुछ और वीडियोस देखेंगे उसमें बताते हैं 84 शक्तियां हैं जिसके थ्रू हमारा शरीर काम करता है या हमारे ऑर्गन काम करते हैं. तो कौन सी शक्ति कमजोर हो गई है जिसकी वजह से आप दिक्कत में आ गए हैं, ये प्राण शक्ति डायग्नोसिस है. When these three things reach Swami, which I just shared with you, he is able to determine the weak functional strength in your body, due to which you have landed in your current health issues, and uh, you may get into further health issues, because most of the time one issue comes, then another, because everything is linked. सब कुछ एक दूसरे से कनेक्टेड है, एक दिक्कत आती है दूसरी तीसरी चौथी. तो शुरुआत कहाँ से हुई है ये प्राण शक्ति डायग्नोसिस से पता कर पाते हैं स्वामी जी. देन इन द 11th or 12th week, every participant will get their customized Kumbhak practices, or they'll get a customized therapy for them. 11वें या 12वें हफ्ते में सभी को, जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, उनको एक कस्टमाइज्ड या पर्सनलाइज्ड कुंभक प्रैक्टिस मिलेंगी. कुंभक थेरेपी को कस्टमाइज करेंगे स्वामी जी 11वें या 12वें हफ्ते में. ये इसलिए क्योंकि मान लीजिए 20 लोग हैं जिनको पार्किंसंस है या और कोई भी दिक्कत है, तो सबके कारण अलग अलग हो सकते हैं. इसीलिए पर्सनलाइजेशन है. जैसे दवाई में देखते हैं ना कि सभी को सेम टाइप की दवाई मिलती है, बट ये पर्सनलाइज्ड है. दिस इज अ पर्सनलाइज्ड और कस्टमाइज्ड therapy that will be given in the 11th or 12th week. The diagnosis will be done in the first 10 days of enrolling in the program. Diagnosis जो होगा पहले 10 दिन के अंदर हो जाएगा, लेकिन इस्तेमाल होगा 11वें या 12वें हफ्ते में. अब एक सवाल उठता है, डायग्नोसिस शुरुआत में हो तो कस्टमाइजेशन लास्ट में क्यों है? The question arises, if the diagnosis is done initially in the beginning, why the customization happens in the last week, uh, or after 10 weeks? There's a reason behind it. एक कारण है उसका. Any kind of chronic ailment means that there's already internal organ weakness. कोई भी बड़ी बीमारी जो है, जैसे पार्किंसन की हम यहाँ बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑर्गन वीकनेस ऑलरेडी है, फंक्शनल वीकनेस है. दो ऑर्गन काम जैसे करना चाहिए वैसे नहीं कर रहा है, अल्टीमेटली ऑर्गन में वीकनेस है. अगर ये कस्टमाइज प्रैक्टिस जो कि बहुत पावरफुल होती हैं, अगर ये शुरुआत में दे दी जाएंगी तो आपका शरीर झेल नहीं पाएगा. दीज कस्टमाइज प्रैक्टिसेस आर गिवन इन द 10th week, after 10 weeks, because these are really powerful, and if given in the first week only, your body will not be able to bear the impact of these practices. That's why they are given in the last. इसलिए इसको लास्ट में दिया जाता है, क्योंकि इन 10 हफ्ते में आपके ऑर्गन स्ट्रेंथ को एक लेवल तक थोड़ा ऊपर ले आते हैं, ताकि जब आपको कस्टमाइज प्रैक्टिसेस मिले तो आपका शरीर बगैर दिक्कत के कर सके. In these 10 weeks, your body's internal strength, the organ strength, will be brought to a level a bit higher, so that when you do these customized practices, the body does not come under any kind of a problem. Now, class dates, कब क्लास शुरू हो रही है? This is an evening batch starting on 9th February 7 p.m. ये शाम 7 बजे का बैच है जो 9 फरवरी को शुरू हो रहा है, सोमवार का दिन है. फिर एक मॉर्निंग बैच है. मॉर्निंग बैच 23 फरवरी को है जो सुबह 7 बजे का बैच है. दिस बैच इज एट 7 a.m. on 23rd February. So depending on what time suits you, you can choose that batch. जो भी आपको जिस भी बैच में सुविधा है, जिस भी बैच के टाइम में सुविधा है, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं. Now for most people, Kumbhak is something new. So whenever we hear something for the first time, we do not get so much of confidence. जब हम किसी चीज के बारे में पहली बार सुनते हैं, और ज्यादातर लोगों ने कुंभक के बारे में नहीं सुना होता, तो इतना कॉन्फिडेंस नहीं आता. अब जैसे अभी हमने डॉक्टर सबेर का और मुरली सर का एक उनका एक्सपीरियंस सुना है, तो थोड़ा शायद कॉन्फिडेंस कुछ लोगों का बना होगा. इसी तरीके से आप गूगल रिव्यूज हमारे देख सकते हैं, टेस्टिमोनियल्स यूट्यूब पर बहुत
सारे वहां पे सुन सकते हैं. If you type Avisa Healing in your browser, you'll be able to reach our Google page, and you'll be able to see more than 300 testimonials there. 300 से ज्यादा Google reviews हैं. और आप स्टार रेटिंग मार्क कीजिए, 4.8 है, जो काफी हाई मानी जाती है. आप देखिए, समझिए लोग कैसे बोल रहे हैं, क्या उनको दिक्कतें थी, कैसे उनको फायदा हुआ. और अगर आप यूट्यूब पर अभी से हीलिंग टाइप करेंगे तो एक ग्रीन कलर का लोगो है, ये हमारा यूट्यूब चैनल है. दिस इज आवर यूट्यूब चैनल. यू कैन गो देयर आर मोर देन 2800 वीडियोस, and there'll be more than 550 testimonials. So just go and have a look, read, listen, watch, so that you get more confidence into this, and so that you are able to take advantage. So let's talk about the fees. What is the course fees? Now there are two options. दो तरीके से आप इस प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं. One-on-one premium classes are there and group classes. In one-on-one, there'll be one instructor dedicated for one participant. एक इंस्ट्रक्टर एक पार्टिसिपेंट. इसकी फीस ज्यादा होती है क्योंकि सिंपल, क्योंकि एक इंस्ट्रक्टर पूरा आपको मिलता है. इसकी फीस 60,000 होती है. 30,000 बिफोर स्टार्टिंग, 30,000 आफ्टर 1 मंथ. नाउ इफ यू पे इन अ सिंगल शॉट, दिस इज 50,000. फॉर ग्रुप क्लासेस देयर विल बी मल्टीपल participants. 20 to 25 participants will be there in one batch. The fees is 21,500. But there's a EMI plan also, and the fees which we announce in every live webinar is 12,000 only. Normally, if you enroll, it will be 21,500, but special price is given for live webinars. 6,000 can be paid before starting, 6,000 after a month. Now, if somebody pays in a single shot, there's further discount. What if you pay the fees in a single shot? एक शॉट में अगर फी पे करते हैं तो और इसमें डिस्काउंट हो जाता है, और ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस थेरेपी का फायदा ले सकें. जस्ट 8499 इज द फी, इंक्लूडिंग एवरीथिंग आई टॉक्ड अबाउट. इस 8500 के आसपास की इसमें फीस है. पूरे 10 हफ्ते का इसमें जितनी भी मैंने बातें की, लाइव क्लासेस हैं, डायग्नोसिस है, कस्टमाइजेशन है, डेली सपोर्ट इन द व्हाट्सएप ग्रुप, written instructions, recording access, everything is included. And this includes the tax also, which we pay to the government. Because we are a private limited company, we have to pay taxes to the government. इसमें टैक्स भी इंक्लूडेड है, तो इसके अलावा आपने और कुछ पे नहीं करना है. लेकिन सीट्स लिमिटेड होती हैं, तो ये फीस हम सिर्फ 2 दिन के लिए ऑफर कर सकते हैं, यानी कि 8 फरवरी तक. वी आर एबल टू ऑफर दिस फी फॉर 2 days only. So till 8th February, 12:30 p.m. you can avail of this fees. Now, how to enroll? कैसे enroll करना है? First step is to pay the program fee. Then you post the payment receipt in the WhatsApp group. It's the same WhatsApp group in which you got the link to attend this webinar. फी पे करने के बाद अपनी रिसीप्ट शेयर कर देंगे ग्रुप में. हमारी टीम से नेहा और झांसी हैं, वो आपकी पेमेंट कंफर्म करेंगी, और ये वही व्हाट्सएप ग्रुप है जहां से आपको इस वेबिनार का लिंक मिलेगा. Then you will be filling up a participant onboarding form, which Jhansi from our team will send you, and she will also send you the class WhatsApp group join link. When you post your receipt, just mention whether you want the evening batch or the morning batch, and she will send you the link of that WhatsApp group. जब आप पोस्ट करेंगे अपना रिसिप्ट, तो मेंशन कर दीजिए कि आपको 7 AM सुबह का बैच चाहिए या 7 PM शाम का बैच चाहिए. तो झांसी जो है आपको लिंक भेजेंगे, उसी क्लास ग्रुप का लिंक भेजेंगे, और आप उसमें ऐड हो जाएंगे. And then step 5 is to start attending शांत वृत्ति क्लासेस. सिंपल 5 स्टेप प्रोसेस है, उसके बाद आपकी क्लासेस शुरू हो जाती हैं. These are the payment methods or the normal online methods that you see nowadays. If you don't use any online method, you can go to the nearest branch of ICICI Bank and deposit cash in our account also. अगर आप ऑनलाइन मेथड से पेमेंट नहीं करते हैं, तो किसी भी नजदीकी ICICI बैंक की ब्रांच में जाकर कैश डिपॉजिट करा सकते हैं. For international payments, you can use your credit card, PayPal account, or a site called wise.com. A lot of our participants from overseas, they pay through this website, wise.com, because there's a very low transaction fees. इसमें काफी low transaction fees होती है, तो आप इसे कर सकते हैं. And this is the world-class support team that will be at your service to make sure that you are able to do this program successfully. ये निश्चित करती है ये टीम जो है कि आप ये प्रोग्राम बहुत
अच्छे तरीके से कर पाए और इसका फायदा ले सकें, जैसे कि हजारों हजारों लोग ऑलरेडी ले चुके हैं। टीम में कौन कौन है? हु ऑल आर इन द टीम? We have Rachna Shima Butra, she's the program director and she's the host of this webinar. Shalini Bhagwat, class manager hai. Neha, Sanvi and Jhansi, they are in charge of enrollments. Manager IT hai Shwani. Mentors mein hai Ranjana, Soni, Aruna, Neena, Meera, Sushma, Manvi, Anjali, Ganga, Arijit, Vivek. Three of them take international batches and the others take Indian batches. In technical, we have Sheetal. Sheetal is the person who will help you if you face any issues with technology. If your videos are not playing, if you're not able to log in, because the recording of the classes will require a login ID and password, where all the previous class recordings will be available. जो आप रिकॉर्डिंग देख पाएंगे वो एक लॉगिन आईडी और पासवर्ड के थ्रू देख पाएंगे। तो अगर वो काम नहीं कर रहा है, अगर वीडियोस प्ले नहीं हो रहे हैं, तो शीतल हेल्प करेंगे आपकी। पर्सनल सपोर्ट में अनीता है। अनीता आप सभी पार्टिसिपेंट्स को फोन पर कॉल करती हैं ये जानने के लिए कि कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है, सब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये अगर किसी को दिक्कत हो रही होती है तो ये तुरंत सोल्यूशन देती है, बिकॉज ये डायरेक्टली फोन पर बात करती है आपसे। Anita calls each and every participant on the phone to find out how the program is going on, if you're able to understand everything, and if there's any problem that you're facing, she'll give a very fast solution. And for collaborations and joint, we do a lot of collaborations with other holistic healers and therapists, and we do our joint ventures also with other healers. For that, Anil Chauhan, that's me. I take care of that part of the organization. So this is the whole team that will make sure that you are able to take advantage of this program and do it successfully. With this, I come to the end of this part of the presentation. Thank you and namaskar. And we'll now take up the questions, and I'll activate the chat now because till now it was deactivated, so that you don't get disturbed by the constant posting of messages. Just give me a second uh, as I activate the chat once again. Yes, I've activated the chat now. You can put your question in the chat and I'll try to answer each and every. I have a couple of suggestions and one request. Sure, please go ahead. Okay, let me unmute you and then you'll be able to Prashant cover. Just a second. Let me just unmute you. Give me a second. Yes, sir. I unmuted you. You can unmute for yes, please. Hi, good evening, everybody. Can you hear my voice? Yes, sir. Yeah, first of all, good evening to everyone. Thank you for organizing and hosting the webinar. And my sincere appreciation to Rachna ji, Anil ji, to you, and Swami ji as well. My name is Prashant Dakkanur, and I'm originally from Belgavi, Karnataka, and I'm currently residing in Ahmedabad. So I have two suggestions that I would like to make, which I noticed during your presentation. If feasible, can you conduct the webinar separately in Hindi and English? And this may help avoid confusion and improve audience engagement. This could also be particularly beneficial as the participants include viewers from Hindi and non-Hindi speaking states, as well as international attendees. Secondly, incorporating visual slides and images into the presentation could greatly enhance the understanding, especially for patients. Visual aids often make complex processes easier to grasp. And as saying goes, an image is worth 1,000 words. So that would be great. And coming back to my request, I have worked with stem cell clinics in India and overseas, and I have personally observed positive impact of stem cell therapies, particularly for Parkinson's disease. I would encourage viewers to explore and research the application of stem cells, not only for Parkinson's, but also for other medical conditions such as diabetes, stroke-induced paralysis, rheumatoid arthritis, COPD, etc.
And if anybody wants any information, then I can provide. And also, I want to know if I can be a part of your team. And because I saw your team, which comprises of so many people, and I really believe in Ayurveda, and I would like to learn more. And if it is possible for me to learn from you guys and also teach and be a part of your team at no cost, I would like to pay fees for learning, and I wouldn't be charging to like approach patients or get in touch with them or just provide them some information. So I don't know how it works. I can speak to you guys after the session. Thank you. Thank you, Shansa. And yes, all the points have been taken, and it's great if you are working with the team. And I'll just you'll be happy to know that when Kumbhak is done, what you talked about stem cells, what actually is being done is this is an epigenetic trigger which is going to the stem cells only. That's how they in the what do you call the regeneration factors increases, and Yes. without any surgical intervention, without any procedures, Yes. is the most natural way to activate the stem cells. We'll talk about it later on. I'll just uh, I'll just share my number so that you can reach out to me directly. Thank you. Let me do it. Let me do it here, and it would be great to have a conversation with you. Yeah, I've shared this number, and anybody who's wanting to talk tomorrow or day after, you can call me on this number. Yeah, I got it. Thank you, Mr. Ayers. Yeah. Welcome, sir. Okay, so I'll take up the questions now. Let me scroll up. Uh, how long is each session, please? Each session is about 45 to 60 minutes. लगभग 45 से 60 मिनट का एक सेशन रहता है. सेशन के बाद फिर जिन लोगों के कुछ सवाल होते हैं वो रुक जाते हैं. They ask if somebody has questions after the class, they can ask in the live class only. Okay, can you help depression patients who are on antidepressants already? Yes, absolutely. This works like magic in mental issues. And like Swamiji says, there's mental and physical body. These are not two separate things. So yes, and Nikita ji, we'll need some more information. If you can just send me a WhatsApp message on the number that I shared, I'll need more information because we have another program also called Ashtang Chikitsa that takes care of a lot of issues. I mean, 30 plus issues are covered under that. So based on what information you provide us, we'll guide you accordingly. Okay. Cost of therapy 8499 for group classes, which we have shared. We've shared the details in the WhatsApp group also. Time of class, two batches are starting, one at 7 a.m., one at 7 p.m. Details have been again shared in the WhatsApp group. On which days on the week are the classes held? All the dates have been shared in the group. Okay. One short payment detail with discount. 8499 is the group class fees with discount. हमें कौन सा प्राणायाम सिखाया जाएगा? ये प्राणायाम नहीं है रमेश सर जी. ये एडवांस्ड कुंभक या ब्रीदिंग टेक्निक्स होती है. एक रेशियो होता है, कितना सांस लेना है, कितना होल्ड करना है, होल्ड करते वक्त फोकस कहाँ करना है. ये फोकस और होल्ड, ब्रेथ होल्ड का कॉम्बिनेशन होता है. और इसमें बहुत सारी और चीजें होती है, मसाजेज हैं. जैसे अगर आपने वीडियो देखा हो स्वामी जी का, उसमें बताते हैं बहुत सारी चीजें इसमें कराई जाएंगी. अगर आपने लेट ज्वाइन किया है तो आप वेबिनार की रिकॉर्डिंग भी देख सकते हैं. Any further discount for person already done Kumbhak course? Raju Bhosle, sir. Yeah, please get in touch with me on the number I shared. And for our old participants who've already done some other course, yes, we have a discount. Then Jayanta ji, I'm suffering severe constipation with Parkinson. Please give solution, Jayanta from New Delhi. And this is the course for that, because most of the patients do have, most of the Parkinson patients have a constipation problem. Smita ma'am, I'll take your question. Let me just go through this. I've seen you. I've noticed you. Yes, I'll surely take your question. I'm just trying to answer in the chat.
Can this program be done by heart patient who had stenting 5 years earlier? Also, please share session tenure like 30 minutes or 60 minutes. I've already shared. 40 to 60 minutes the tenure will be. And yes, anybody with a heart patient who's been a heart patient can do this program. And this will even help you in your heart issues also. But it's a holistic method. Not any holistic method. The body is treated as a whole, right? Because everything works inside in coordination with everything, every other organ. Yes, it can be done. ओके प्रभाकर जी कुंभक थेरेपी से कितने दिन में आराम मिलना स्टार्ट हो जाएगा? ओके सभी को अलग अलग समय लगता है क्योंकि सभी की दिक्कत अलग है, एज अलग है, लाइफस्टाइल अलग है, खाना पीना सब कुछ अलग है. इतना किसने मेडिसिन ऑलरेडी खाया हुआ है वो भी एक मेजर फैक्टर होता है. लेकिन एक जो चीज 80% लोग महसूस करते हैं, इंक्रीज इन एनर्जी लेवल्स. जैसे ही आप 1 या 2 3 बार करेंगे कुंभक को, एनर्जी बूस्ट आप देखेंगे. और स्वामी जी की अगर आपने वीडियो में बात सुनी हो, ये माइटोकॉन्ड्रिया की डेंसिटी बढ़ा देता है. तो सभी को पता है कि पावर हाउस बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को, क्योंकि एनर्जी प्रोडक्शन वहीं पे होता है. और ये पूरा दिन मेंटेन रहता है एनर्जी लेवल. तो किसी को 1 हफ्ते में रिजल्ट मिलना थोड़ा शुरू हो जाता है, लेकिन एनर्जी बूस्ट सभी को दिखाई देता है. 80% लोगों में ये देखा जा सकता है. किसी को 10 हफ्ते में ही बहुत सारे रिजल्ट्स मिलना शुरू हो जाते हैं, किसी को 2 3 महीने भी लग जाते हैं. डिपेंड्स, सबका शरीर अलग है. सेम थेरेपी सभी के शरीर में अलग अलग तरीके से रिस्पॉन्स देती है, बिकॉज सब चीजें अलग है ना हमारे शरीर में. कितने टाइम से बीमारी है, बहुत सारे फैक्टर्स है. मुरा ओके Raj Tiwari ji, I am 33 male. I get tremors and balancing issues, but when I searched on Google about Parkinson, it usually happens with a person of age 55. I am not able to understand, is it Parkinson or something else? I've shared my number. Raj Tiwari ji, we'll need more information from you. And it's nowadays chronic ailments which used to be called problems of the old age are happening in youngsters also. We've seen 18-year kids suffering from a lot of chronic ailments. 20-year-olds. So things have drastically changed. But we'll need more information, Raj Tiwari sir. So you just send me a WhatsApp message on this number I've shared. I'll again share my number for the benefit of everybody. Okay, now I'll take Smita ma'am's question, and after that I'll again get back to the chat messages. Ma'am, I'm unmuting you. Smita ma'am. Thank you very much for giving this opportunity. I have done Ashtanga Yoga Kitsa. I have completed this Parkinson course, and I joined the practice classes currently. So I did my Parkinson with Mr. Aranjit. Sorry. So I just recently did it in Arijit. Sorry, Arijit. Yeah. Okay. Now my question is, I'm from Mumbai. In Mumbai, we have, there are various groups or various societies or organizations like yourself who are working on Parkinson in little different way. The way you are working is on red hole, that is the theory or the base you take. I mean, it is wonderful way of doing it. In Bombay, there is a Parkinson Society. Every Wednesday, we have online classes, and they handle so many various aspects of Parkinson, mental, physical, exercise, and all that. There is this Iyengar yoga classes, they also hold a special camps, for Parkinson. Now, my thing is that I would really like that all Parkinson patients should know all these things, what's happening, what they can do, what options they have. एक तरफ हम जो कहते हैं ना कि दवाइयाँ are not the ultimate, and I fully agree. I'm on 2 Sindopa plus currently, and I would like that I don't want to increase my dose, but I would like to try all these kind of various activities and various options, so that my Parkinson is in control. Music therapy, dance therapy, there are so many things happening. But my pain is, or my second thing is that if I ask Avisa,
पार्किंसन सोसाइटी की कोई चीज है जो उसकी पब्लिसिटी वो आप अनाउंस करो तो दे विल रिफ्यूज दिस पीपल दे विल रिफ्यूज। अभी सर आज आपका वेबिनार था उसकी मैंने काफी कोशिश की कि भाई इसमें वो लोग वहां के दूसरे पेशेंट्स में ज्वाइन कर सके, but it was not allowed. So I would really like that all the people who are working on Parkinson for the benefit of Parkinson patients, they should come together at least in some sort of a collaborative status or understanding and knowing each other. And I feel all are good. Everybody is doing their best, and I think it's a holistic thing. You know, when I can do my dance, I do singing, I can do breathing with breath control. Everything is important and necessary. No difference. If you can, if you want, I can call you also later. But I would really like that something like that can be happened. If that can be done. No, though I would like to be an instrumental for that. You know, if I can help or we can do something about it. So Sure, this is Smita for ma'am. a large community. Yes, Yeah. yes. No, that's all. Yeah. Please. Thank you so much. I'll just share my number with you. So please get in touch with me tomorrow, and then I'll talk to you, and then we'll see what we Sure. can do, what best we can do. Yeah. Sure. Okay. I just sent you my number, and I'll again go back to the chat messages. एक बैच में कितने क्लास होंगे? सभी बैचेस में रमेश सर 20 क्लासेस होंगी, 2 क्लास हर हफ्ते होंगी 10 हफ्ते के लिए। Gayatri Patil ji, sir, already have attended Kumbhak therapy and practicing it. Is it different from Kumbhak which I have did? I don't know which Kumbhak you did, Gayatri ma'am, which program you did, because there are a lot of programs that Swamiji has designed. So based on what you have done, I'll be able to answer that. Now, Oppo A54, any medicine you will give? No, no medicines are given. This is a way to get rid of medicines, not add more medicines. Okay. Zoom user, I've shared my number again. I'll share it once again. Okay. Kiran gifting. Let me see. I'm sorry if I skip your question because there are so many of them and they just roll up. Let me just. If you can put your question again, Kiran ji, because I'm not able to locate it. Balachandran ma'am, I'll take up your question. I see that you've raised your hand. Just give me a second. I'll mute you. Please unmute at your end. I've unmuted from my end. Namaste, Ji. I am an atypical Parkinson patient. I don't have tremors on the hand, but I have tremors on the leg. That is why I think they call it atypical. Will I get benefited from this Kumbhak? Yes, yes, absolutely. This is all about bringing back the balance and strengthening the internal organs, the nervous system, everything. So definitely, if you keep practicing on a regular basis, you'll definitely get results. Okay. How long we Yes. have to practice? That's a To question get which we result? can't answer in one this thing. Like I was answering to somebody else, that it'll take different time for different people. But one thing you'll notice within a week only, that there will be an energy boost. Energy boost will be there, and any kind of healing requires energy. So it takes different time for different people, because there are a lot of factors: age, how much of medicines one has already taken inside the body. A lot of factors are there. Food, lifestyle, so many factors are there. I am not taking Sindopa plus, but Okay. Sindopa CR. That is it. Yeah, whatever. Yeah. Okay.
Okay. Again to the chat questions. My father is suffering from progressive supranuclear palsy. How will this help him? We'll need more information. Please connect me, connect with me on my WhatsApp number. We'll need some more information so that we can suggest whether this is the or some other program, Kumbhak program for your father, Kiran ji. Ask him, what if I'm traveling during the course? Uh, you'll have recording of all the classes. So you can refer to those recording and do your daily practice. Deepika, if someone has Parkinson, is it advisable for other family members to start Kumbhak therapy to prevent it? Yes, absolutely. This can be used as a preventive also, because it takes years and years for any ailment, chronic ailment to surface. So if you're already strengthening your organs by using it as a preventive method, definitely yes, this can be done. And a lot of people join program, and we'll suggest another program, Ashtang Chikitsa, because that addresses more than 30 times of problem. And Swamiji suggests that program if somebody has not been labeled as a chronic patient, but they want to use it as preventive, Ashtang Chikitsa is the program. That's a 9-week program. I did B09 Shantvritti. Is this the same? Zoom user. Yes, sir. This is the Shantvritti program only. You need not join this. Sandeep ji, I have epilepsy problem from last 30 years. Please suggest first time I joined. Ashtang Chikitsa is the program that is suggested for you, Sandeep ji. And you can connect me on my number, which I shared on WhatsApp tomorrow. You can send the message tonight also so that I can get back to you tomorrow. Samsung SM, is this course applicable for advanced stages of Parkinson with dementia? Any stage. Any stage. And there's another question, I mean, for the benefit of everybody, another question comes often is that, will it reverse completely? It may not. It may not. But if it improves 10%, 15%, 20%, 40%, 50%, 60%, that's also good enough without using any medication. Right? Because like Swamiji says, you won't become the same that you were before, but improvements is what matters. Improvement is what matters. If you are able to lead a independent life without using support of any family member, that's wonderful. Okay, Sheetal Verma, I won't be able to attend online classes, so can I practice with recorded classes? Absolutely. Sheetalji, and if through the recording, if you have questions, you'll be able to ask them in your class WhatsApp group. And your mentors, they'll answer all the question in the group. A lot of people from overseas who are staying in a different time zone, they're not able to attend any live class. So what they do is this, they watch the recording, do the practices. In case of any doubt, they ask in the WhatsApp group. And then there'll be written instructions also. Ramesh Singh ji, let me unmute you if you're still here. Okay. Is this course applicable for advanced? Yes, I've answered this. Vinu Sharma, people who are elderly have difficulty handling the stress of attending the classes, etc. They need handholding from a person within the family. Is there any provision for the same? For inclusion of a family member in the family? Absolutely. Any family member can join along with the participant and guide them accordingly. And a lot of Parkinson patients, they do have a family member, and especially somebody who's not able to understand things online. Yes, this is allowed. Vinu Sharma, any family member can join along with. And in some cases, the patient is not able to join, so the family member joins, understand things, and then makes the practices, makes the patient do all the practices. Will it address both the trembling and constipation? Yes, yes. Metabolism is the first thing that is addressed in any Kumbhak program, because that is where the
problem arises from, most of the time. If someone takes one-on-one classes and he or she is traveling on the day of class, where did the question go? Traveling on the day of the class, how will it manage? Shelly Bhadwaji, the dates are fixed because our mentors, they are occupied, they have a schedule, they have a timetable which they have to follow. So if you miss a class, it can't be rearranged. The only thing is that whatever was supposed to be taught in that class, that you'll be learning in the next class, which means extension of your uh, course. So that is okay. Once a while, it's okay, but it shouldn't be a regular feature. Okay. Zoom user. If my husband is doing Astika Kumbhak, when he can start doing Shantvritti as preventive measure. If he's doing any type of Kumbhak, then no need to join another Kumbhak program just for prevention. That is enough in itself. Please share a number in WhatsApp group. We are already in the WhatsApp group. There are 4 or 5 admins, so I'm one of them. Please share WhatsApp. Okay, please unmute me. I want to talk. Ramesh Singh. Let me see. Let me locate you. Just give me a second. Yes, Ramesh sir, you can unmute yourself. I've unmuted from my side. नमस्कार सर. नमस्कार जी. हेलो सर. Yes, जी सर. नमस्कार. मैं ये जानना चाहता हूँ हम जी किस प्रकार का कुंभक हम लोग सीखते हैं इस सेशन में, जो हम लोग अगर ज्वाइन करते हैं कोर्स. ये मैं आपको ना व्हाट्सएप कर दूंगा कि क्या क्या एग्जैक्ट आप नाम जानना चाह रहे हैं उसका, या क्या जानना चाह रहे हैं. नाम जानना चाह रहे हैं सर. मैं आपको जैसे सब वो. मैं योग थेरेपिस्ट हूँ, जी. तो मैं भी सीखूंगा, ज्वाइन करूंगा, पर मेरे कुछ मरीज हैं जिनको इस तरह का है रोग, पार्किंसन का. तो हम्म. मोस्टली हम उनको प्राणायाम ही कराते हैं अच्छा. और कुंभक को विशेष फोकस नहीं देते, लेकिन आपके उससे पता चल रहा है कि कुंभक इसमें ज्यादा लाभकारी है. तो हाँ यही हाँ, मैं वो जानना मैं आपको चाहता शेयर कर दूँ जी. मैं शेयर कर दूंगा. आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज भेज दीजिए, जो मैंने नंबर शेयर किया अपना. हूँ. जी जी. वो डेली बेस, वो हर एक क्लास में कौन सा कुंभक उसमें बताया जाएगा, वो मैं आपको शेयर कर अच्छा, दूंगा. मतलब कुंभक अलग अलग तरह के कुंभक ही सिखाए जाएंगे मोस्टली ना सर. हाँ हाँ, अलग अलग कुंभक होंगे. फिर इसमें मसाजेस भी होती हैं, कुछ स्पेशल ऑयल्स होते हैं, एक जी. मंत्र भी दिया जाता है हीलिंग के लिए. तो बहुत सारी चीजें हैं इसमें, ये सिर्फ कुंभक ही नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं. सर कितने टोटल क्लास होंगे, कितने वीक में. टोटल 20 क्लास होंगे 10 हफ्तों में. हर हफ्ते 2 क्लास होंगी. ठीक सर. ठीक है जी. हाँ. थैंक यू सर. ओके सर, वेलकम. ओके. I will be traveling in March. When will be the next batch begin? Every month we start 2 new batches. So you can join as per your availability. Rebecca, I'm 77 years. I'm suffering Parkinson disease since 3 years. Oh, all all the characters have been written in one, though I'm not able to understand. Please get in touch with me on my WhatsApp number, which I shared. I'll share once again for everybody's benefit. Afzal is asking, what are the charges to join the batch? For group classes, the charge is 8499 for the 10-week program. Please watch the recording once again, because in the later part of the webinar, I shared the details of the charges and classes, everything. Okay. So I've taken up, I think, all the questions in the chat. If I missed anyone's question, please post it again so that I can answer. Where to fill the form to write series of disease of a person. That happens after you enroll.
After you enroll in the first or second class, it will be explained how to fill that form. And then you'll get a week or 10 days to fill up that form. That happens after you enroll. Recording link, please. We've shared in the webinar group, the WhatsApp group, webinar, the recording link. I'll just share once again in the chat also, in case you want to send to somebody else or want to watch later on. Just give me a second and I'll get the link. I'm sharing the recording link. I'll share the link here. Can a patient with DBS implant do this Kumbhak? Yes, a lot of patients, lot of participants join who already done DBS. Okay, Rebecca Ulhanan. I've noted your number and I'll send you a message after the webinar and then I'll take more details from you. Mm, okay, Oppo, joined late, fees, online duration. Please watch the recording of the webinar and you'll get all the details. But for the information of everybody, the fees for group class is 8499. Duration of the course is 10 weeks. 2 live classes will be conducted per week for 10 weeks. For more details, please watch the recording. The link I've already shared. I'll share it once again. I'll share a WhatsApp number of one of our team members, Neha, who's the enrollment in charge. So if somebody calls me and if I don't pick up, just call Neha, please. Let me just get her number and I'll share. Because maybe I'm in a meeting or something, so I may not pick up the call. But if I don't pick up, just send me a WhatsApp message and I'll get back to you after I'm over with my meeting. And just sharing Neha's number. Please note Neha's number also in case you want to ask, clarify anything. You can get in touch with Neha also tomorrow or day after. Okay, so we are through with all the questions. I hope it was an informative session for all of you. And maybe you got some insight how you can manage your disease properly and maybe go towards reversing the problem. And if you weren't able to ask your question, you can post your question in the WhatsApp group also, the webinar group from which you got the link to this webinar, and we'll answer everything in detail. Batch will start from one batch, the 7 p.m. batch is starting from 9th February. Then morning batch is starting on 23rd February, 7 a.m. Evening batch is starting on
9th February, 7 p.m. Morning batch is starting on 23rd February, 7 a.m. Please see in the webinar group and you'll get all the details. And with this, we'll close the session. Thank you, everyone. And I wish you all the best. And may you get out of your issues, take advantage of Kumbhak, and lead a very healthy and independent life. Thank you, everyone. Namaskar. Good night.